Today I have to join from a different room, packing going on at house. We are not moving anywhere. We have to go for a Ganesh festival at our native place. Okay, sit in a cross-leg position, back straight, eyes closed. Just remain silent for some time. Let's take 3 deep breaths. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. One more time. Breathe in and slowly breathe out. Join your hands in prayer position. We will chant Guru Shlok. Take a deep breath in. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Shanti Shanti Shanti. Rub your palms, place it on ice, and slowly slide the palms down. Let's move to cat and cow position. Okay. Exhale down, inhale up. Let's do cat and cow. Exhale down, inhale up. Exhale, round back, inhale up. Exhale down, inhale up. 4 more times. Exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, chin up, exhale, inhale, exhale down and hold for 5 count. Round back करना है और 5 count hold. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale up, chin up, hip up, hold for 5. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale, come to inverted V position. Let's start jogging our legs. पहले right leg toes पे, फिर left, right, left, right, left. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, now go on toes, दोनों legs से. Exhale, heels को नीचे push करेंगे. Inhale on toes. Exhale, heels down. Inhale. Exhale, heels down. Inhale. Exhale, heels down. Okay, now with the right hand,
लेफ्ट टो को टच करना है लेफ्ट से राइट. सो इट इज 1 2. टो टच नहीं हो रहा तो पास में लेके जाओ हाथ, जितना होगा उतना. किसी को ऑलरेडी हाथ पे प्रेशर है तो थोड़े टाइम रेस्ट करना, फिर स्टार्ट करना 20. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट. 1 राइट से लेफ्ट टो, लेफ्ट से राइट. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Walk or jump forward, come to standing. Okay, everyone can see me? Okay, now keep the hands navel line में, नाभि के line में, and we will start touching the knee to the palm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Those who can do fast. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Relax. Okay, now side to side. Left से right, right से left, left से right, right से left. Continue. Start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Hands on the waist. Heel से hip को kick करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8. नी आगे नहीं आना चाहिए. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Okay, left hand remains on the waist. Right hand से knee up. Hold the knee. Right thigh stomach के करीब. Hold there. 1 2. Let's do together. 3 4 5 6. Take the right leg to the right side. Body remains straight. 1 2 3 4 5 6. With the left hand, hold the right foot as if you are holding a tray. 1 2 3 4 5 6. Stay there, stay there. Now we will hold the right ankle. I'll have to come slightly back. यहाँ से right ankle hold किया and we bend forward in Natarajasana. Okay, heel को away from the hips करना है. Let's start. 1 balance. 2 3 4 5 6. Very good. 7 8. Inhale up. Exhale, release the right leg. Same on the left. पहले left leg ऊपर, balance करो. 1 6 count. 2 3. नीचे वाला knee straight. 4 5 6. Exhale, left leg to the left side. 1 2 3 4 5 6. Left foot को right हाथ से पकड़ना है and take it up. 1 2 3 4 5 6. Hold the left ankle, drop forward to Natarajasana. Left ankle को left हाथ से पकड़ना है and bend forward to Natarajasana. Stay there. 1 2 3
4 5 6 7 8. Exhale down. Okay, now 2 rounds of either walking jacks or jumping jacks. वॉकिंग जैक्स है राइट लेफ्ट, जब पैर बाहर जाएगा तब हाथ एक साथ आ जाएगा. जंपिंग जैक्स यू नो ऑलरेडी. ओके, हम लोग 30 के 2 राउंड्स करेंगे. लेट्स स्टार्ट. आई वांट टू सी इफ एवरीवन इज डूइंग. लेट्स स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7. Rahul, you can do jumping jacks. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Relax. Take 2-3 breaths and we do one more time. Let's do 30 this time. I'll count a bit faster. Let's start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Come at the back of the mat. Okay, mat के पीछे की तरफ आना है. Inhale, hands up. Exhale, bend forward, crawl 5 times. With 5 count पे आगे आगे क्रॉल करना है. प्लैंक में जाएगा. 1 2 3 4 5. होल्डर, शोल्डर विद सेम लाइन, हिप स्ट्रेट लाइन में रहेगा, ना ऊपर ना नीचे. 10 काउंट होल्ड. 1 2. We are just warming up. 3 4 5. Hold 6 7 8 9 10. Walk back 5 count पे. 1 2 3 4 5. Inhale, hands up. Exhale, hand down. और 2 बार सेम चीज करना है. जस्ट रिमेम्बर, जब क्रॉल करोगी तो फिंगर्स पे क्रॉल मत करना. पूरा पाम, पूरी हथेली नीचे रहेगी. स्प्रेड ऑल 5 फिंगर्स. 5 काउंट पे आगे गए. 5 काउंट बैक and hand down. All right, 2 more times. Inhale, hands up. Exhale, bend forward. Crawl, 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 crawl. 1 2. Crawl करो आगे प्लैंक में. 3 4 5. Hold 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Walk back. 1 2 3 4 5. Inhale, hand up. Exhale, bend forward and crawl. Last time. Crawl. 1 2 3 4 5. Hold 10. इसकी अब इस बार 10 काउंट होल्ड करेंगे और 5 पुशअप्स करेंगे. होल्ड 10. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Drop the knee down. Slightly hip आगे. 5 push-ups. 1 up 2 up 3 up 4 up 5 up. Walk back. Inhale, hands up. Come up, come up, come up, everyone. Now we'll do asanas. थोड़ा बॉडी अच्छे से वार्म्ड अप है, सारे जॉइंट्स वर्कड आउट है, एक्टिवेटेड है. हिप लेवल डिस्टेंस. Interlock your fingers. Place it on top of the head. Okay, hip level distance रखना या फिर shoulder level. Inhale, reverse and stretch up. Tadasana. Hold for 10.
ऊपर स्पाइन को स्ट्रेच करते रहना, स्टे देयर. 2, 3, sound not coming. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhale down. Okay, the sound is coming. One more time. Inhale, stretch up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhale, hand down. Slightly widen the gap. Okay, hip level से ज़्यादा distance. Inhale, stretch up. Don't take the heels up. पैर नीचे ही रहेंगे फ्लोर पे, पूरा पैर. Inhale again. Exhale, bend to the right side. 1, 2, 3. Keep stretching the arm. 4, 5, 6. Inhale, center. Exhale, left. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale, center. One more time. Right. Hold 6. 1, 2, 3. दोनों knees straight. 4, 5, 6. Inhale, center. Exhale, left. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale, center. Hands on top of the head and complete down. हम लोग ने ताड़ासन किया. अभी जो साइड बेंट है उसको त्रियक ताड़ासन बोलते हैं. Now we will do Konasana. How to do it? Just watch. Hip level से slightly ज़्यादा distance. Right hand right ear के पास आएगा. Inhaling. Left palm left thigh पे होगा. Body straight. 3 count पे exhale करके नीचे जाना है. Just left हाथ को slide करेंगे. 1, 2, 3. 6 count hold. 6 count hold. And then 3 count. Inhale up again. 1, 2, 3. Right hand down. Same cheese left पे. Alright, let's start. Inhale, right hand up. Bicep close to the ear. 3 count पे. Exhale, bend to the left. 1, 2, 3. 6 count hold. Look at the ceiling or in front. 3, 4, 5, normal breathing. 6. Inhale, count of 3 up. 1, 2, 3. Exhale, right hand down. Same cheese left पे. Inhale, left hand up. Exhale, 3 count पे धीरे धीरे नीचे जाएंगे राइट की तरफ. 1, 2, 3. 6 count hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale, count of 3 up. 1, 2, 3. Exhale, left hand down. Okay, so we did side, we did up. Now forward and back. Once again, watch just once. Inhaling, we will interlock the finger, chest up, neck back. Okay, slightly bend back. Exhale करके we will bend the knees and bend forward. Arms को भी stretch करना है. 5 count रुके. Inhale up, count of 3. 1, 2, 3. Okay, so पहले पीछे 5 counts hold, फिर आगे 5 count hold, then while coming up 3 count के साथ ऊपर आएंगे.
Let's do together. Inhale, interlock fingers, chest up, neck back. Hold for 5. You can do normal breathing or just normal hold. 2. Advait, bend back. 2, 3, 4, 5. Exhale करते वक्त धीरे धीरे bend forward. You can slightly bend the knee. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale, count of 3 up. 1, 2, 3. Exhale, release the hands. Let's do one more time. Okay. Inhale, 5 count hold, bend back. 2, 3, 4, strong legs. 5. Exhale, bend forward, slightly bending the knee. Hold 5. 1, 2. Advait, bend forward. 3, 4, 5. Inhale, count of 3, slowly up. 1, 2, 3. Relax. Next हम लोग कर रहे हैं गरुड़ासन. हम लोग ने पहले क्लास में कभी किया नहीं, तो just pay attention, right? Just watch once. Okay. So left leg पे हम लोग बैलेंस करेंगे. Okay. So inhale, right leg को रैप करना है. पहले just watch. Left leg straight है, उस पे right leg wrap किया. Okay. Now lot of people will be able to just wrap, but try करना है कि toes भी calf के around wrap हो जाए. I'll show it from the back. You can see the toes, how they are wrapping. अगर नहीं हो रहा तो normal. ये था leg position. अभी see the arm position. So जो leg सीधा है, वो हाथ सीधा होगा. दूसरा हाथ जो leg wrap कर रहा है, वो हाथ भी wrap करेगा. Once again I'll show. So inhale, exhale. Left hand straight, inhale, exhale, right arm wrap. 8 count hold करेंगे. फिर inhale, release the hand, exhale, release the leg. Few people might be confused, so we will do together. Left leg पे balance, inhale, exhale, wrap the right leg. Inhale, left arm straight. Exhale, right arm wrap किया. 8 count hold. Too many things happening. Mind body coordination लगेगा. 1, 2, balance. 3, 4. Good for the health of the reproductive organ. 5, 6, 7, 8. Inhale, release the hand. Exhale, release the leg. अभी left leg straight था, अभी right leg straight होगा. Inhale, go on the right leg. Exhale, wrap the left leg around it. Right arm straight. Exhale, wrap the left arm. Stay for 8 count. 1, 2, 3, 4, 5. Normal breathing. 6, 7, 8. Inhale, release the hand. Exhale, release the leg. Relax. Next, we do Veerbhadrasan 3. उसके बाद सूर्य नमस्कार करेंगे. How we do it? We are not doing a flow, सिर्फ individual आसन करेंगे. Left leg आगे. First, just watch. Inhale, hands up. Exhale, we bend forward
and we try to get the head, hip and ankle in a same line. अगर space नहीं है आगे, you can take the hands back. 8 count hold, then back to normal position. Okay, so left leg ahead, inhale, exhale, bend forward. 1. It is not just balancing, it is strength of that leg, strength of the glutes. 2. 3. Very good. 4. Keep breathing. 5. 6. 7. 8. Inhale up. Exhale, hands down. Left leg comes back. Right leg forward. Inhale. Exhale, balance on the right leg. Alright, stay. 8 count hold. 1. कोई एक leg थोड़ा कमजोर होगा, especially the left. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Inhale up. We did 2 count extra. Exhale, hands down. Okay. We will do 3 or 4 sets of Surya Namaskar. फिर आगे जाके sitting asanas करेंगे. Okay. So first Surya Namaskar. We'll complete that. Then sitting asanas. You have to keep time for pranayam as well. We'll do just 3 sets. Pranamasana. Let's do the first one together. Inhale, hand up, bend back. Exhale, bend forward. Inhale, right leg back. Ashwasanchalan. Left leg back plank. Inhale, knee on the floor. Exhale, chest in. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Parvatasana. Inhale, right leg forward. Exhale, left forward. Inhale up. Exhale, Pranamasana. Left side. Inhale. Exhale. Inhale, left leg back. Exhale, right back. Inhale, knee on the floor. Exhale, chest in. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Parvatasana. Inhale, left leg forward. Exhale, right forward. Inhale up. Exhale, Pranamasana. 2 more sets. 2 more sets is 4 Surya Namaskar. Right and left. Let's begin. Let's start. Without instructions. Those who complete 4 Surya Namaskar, which is 2 sets, they will do
butterfly. जिनका 2 सेट हो गया है वो लोग बटरफ्लाई करेंगे. Just relax while doing butterfly. Let's do 10. 1, 2, back straight. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale, chest up, chin up. Exhale, bend forward. Stay there for 8. 1, 2, जितना होगा उतना. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale slowly up. Exhale, straighten the legs. Okay. Inhale करके right heel को hip के करीब लेके जो right sole of the foot है वो inner thigh को touch करेगा left के. Toes pointing the ceiling, knee down. Okay. Inhale, hand up. ताड़ासन में जैसे ऊपर स्ट्रेच करते हैं वैसे ऊपर स्ट्रेच करना है स्पाइन. एंड देन एक्सहेल, स्ट्रेट स्पाइन स्पाइन के साथ आगे बेंड करेंगे. विद मी, स्टे देयर, होल्ड. अगर टोस बहुत इजीली हो रहा है तो एल्बो को नीचे बेंड करेंगे. इफ नॉट एबल टू रीच द टो, जस्ट कीप द बैक स्ट्रेट एंड ट्राई टू गो मोर. अगर बहुत दूर हो तो स्लाइड पल्स कर सकते हो आगे पीछे. Okay, but don't drop the head down. Neck is part of your spine, so don't break it. Straight. 10 count hold. 4. धीरे धीरे आगे जाने का ट्राई करना है. 4, 5. Normal breathing. 6. Here I think you can take the elbow down. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale, come back to normal position, straight spine. Exhale, hand down. सेम साइड पे और एक बार करेंगे. इस बार थोड़ा ज्यादा जा सकते हो. इनहेल, exhale. You have to relax in this position. Observe the stretch on the back of the thighs, hamstring. Keep breathing. 4, 5, very good everyone. 6, एक शोल्डर ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, दोनों शोल्डर सेम लाइन में. 7, 8, 9, 10. Inhale up. Exhale, hands down. Same on other side. इस बार लेफ्ट लेग बेंड है, राइट लेग स्ट्रेट है. इनहेल, एक्सहेल, कोर एंगेज है, रिब्स को ऊपर पुल किया है, लंबा स्पाइन लेके आगे जाएंगे. Even if you're here, it's fine. Try to go bit by bit more. 2, 3. Normal breathing. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Inhale, hand up. Exhale, hands down. Okay. The asana is called Janu Shirshasana. Janu means knee, shields his head. So when the head gets close to the knee, we are completing the posture. One more thing I observed, people are keeping their shoulder tight, shoulder relaxed, and then we go forward. और एक बार same leg पे, right leg पे. Inhale, exhale, 10 count hold. 1, 2, 3, 4, 5, keep breathing. 6, 7, 8, 9, 10. Inhale, hands up. Exhale, release the hand. हम लोग ने 2 फॉरवर्ड बेंड किए, तो एक काउंटर स्ट्रेच करेंगे, रिवर्स ब्रिज. ओके, दोनों लेग स्ट्रेट किए, then bend the knees. Okay, first just watch, fingers सामने की तरफ है. We are lifting the body such that knee, hip, shoulder एक लाइन में आ जाए. It is like a reverse bridge. Don't make it a झूला, झूला मत बनाओ. Okay, lift it up. थोड़ा shoulder पे होगा and wrist पे. Take it. Then down. Second time करेंगे, तब if comfortable, only if comfortable, we will straighten the legs. One leg at a time. 10 count hold and then down. Toes touch नहीं हो रहे तो keep just the heel. Okay, first time normal वाला, second time पूरा straight. Try करना है. Alright, let's start. Inhale, lift. Hold for 10. 1. Keep pushing the hip up. 2. 3. Neck neutral. ज़्यादा ऊपर भी नहीं, नीचे भी नहीं. 3. 4. Keep breathing. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Exhale, hips down. Okay, just one mistake I saw few people doing it. Don't drop the neck back or don't keep it up. It is neutral. ना flex करना है, ना extend करना है. Normal रखना है. Okay, इस बार straight leg करेंगे. Do one leg at a time. दोनों एक साथ मत करो. Right? Let's start. Inhale, lift. Right leg straight. Left leg straight. It is kind of reverse plank. 1, 2. Chaitari ma'am, face relax. 3, 4, 5, 6. Hip up, 7, 8, 9, 10. Exhale, lower back down. Sorry, hip down. Relax. Pull the left leg in, bend it, उसके ऊपर right leg रखिए. Gomukhasan. We will do 2 or 3 classical asanas, फिर we will settle down. आज हम लोग शवासन नहीं करने वाले, we will do something else. It's more better than शवासन. Okay? Left leg के ऊपर right knee. जो knee ऊपर है वो hand ऊपर, right hand up. Exhale, hold it from back. 10 count normal breathing. अगर किसी को हाथ नहीं पहुंच रहा तो just go near, but don't drop the neck forward. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale, release the upper hand, right hand. Exhale, left hand.
नेक्स्ट, अभी राइट फुट का साइड वाला हिस्सा फ्लोर पे था, अभी पूरा राइट फुट फ्लोर पे रखना है, नी के बिसाइड, दोनों हिप्स फ्लोर पे. नाउ इनहेल, टेक द लेफ्ट हैंड अप. एक्सहेल, एल्बो को रैप किया, ट्विस्ट टू राइट. राइट शोल्डर के ऊपर देखना है. 1 2 3, नॉर्मल ब्रीदिंग. 4 5 6 7 8 9 10. Inhale, left hand up. Exhale, left hand down. Let the leg position be same. अभी इसी में थोड़ा एडवांस करेंगे. We will go to the original posture. लेफ्ट हैंड लिया, सेम हैंड, एल्बो को नी के अगेंस्ट क्रॉस करने देखना है. किसी को आशीर्वाद दे रहे हो वैसे मुझे आशीर्वाद देना. ओके, एंड इफ यू आर कंफर्टेबल, योर एंकल की तरफ हैंड लेके जाना है. दोनों शोल्डर एक लाइन में होना चाहिए, एक आगे नहीं. एंड डोंट ड्रॉप द नेक डाउन. नेक नॉर्मल पोजीशन, लुक ओवर द टॉप ऑफ द राइट शोल्डर. 10 काउंट्स रुकेंगे. देन इनहेल अप, exhale, release the left hand. Okay, let's start. Inhale, left hand up, cross the elbow. अगर ये नहीं हो रहा तो फर्स्ट पोजीशन ही करना. If comfortable, reach the ankle or just stay here. Twist back. 10 count hold. पूरा बॉडी ट्विस्ट कर रहा है, इंटरनल ऑर्गन्स निचोड़ रहे हैं पूरे. डिटॉक्सिफाइंग. 3 4 5, very good. Cyril, look over the top of the right shoulder. 3 4, Aditya, good. 5 6 7 8 9 10. Inhale, left hand up. Exhale, left hand down. Release the leg. Same on other side now. पहले राइट लेग बेंट, उसके ऊपर लेफ्ट लेग गौमुखासन करेंगे. पहले दोनों नी एक दूसरे के ऊपर. नाउ फर्स्ट इनहेल, लेफ्ट हैंड अप. एक्सहेल, hold it with the right fingers. Don't drop the neck down. Straight posture. 2, normal breathing. 3 4 5 6 7 8 9 10. Inhale, left hand up. Exhale, right hand down. जो अभी लेफ्ट फुट था उसको स्ट्रेट करेंगे, पूरा फ्लोर पे नीचे रखेंगे सोल ऑफ द फुट को. लेफ्ट लेग बेंड है तो राइट हैंड अप. पहले नॉर्मल वाला जस्ट एल्बो क्रॉस करेंगे. रैप द एल्बो अराउंड द नी, ट्विस्ट बैक. इस बार लेफ्ट की तरफ ट्विस्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8. Inhale, right hand up. Exhale, right hand down. Second time elbow cross करना है और reach the ankle. Inhale, exhale, twist back to the left. 1. Look over the top of the left shoulder. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Inhale, right hand up. Exhale, right hand down. Straighten both legs and then
bend one leg at a time and come to Vajrasan. लास्ट के दो postures, पहले हम लोग करेंगे अर्ध उत्तरासन, काइंड ऑफ हाफ उत्तरासन, जैसे रिवर्स ब्रिज किया था उसी में, बट नी बेंड. इट विल बी योर स्ट्रेच ऑन द थाइज. ओके, तो फिंगर्स पीछे रखे, दे आर पॉइंटिंग स्ट्रेट. इनहेल करके हिप्स को लिफ्ट करना है. स्लाइटली नेक विल गो बैक, स्लाइट. एक्सेल, हिप्स डाउन, 10 काउंट होल्ड. अगर किसी को लोअर बैक पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, पेनफुल है, तो स्किप द एक्सरसाइज. ओके, और एल्स जस्ट होल्ड योर, डू नॉट लिफ्ट द हिप. ओके, नी पे प्रेशर आ रहा है तो भी रिलैक्स करना. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. वी विल डू ट्वाइस. इनहेल, लिफ्ट, 1 2 3, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रहेगा. 4 5 6 7, squeeze the hips, push the hip more up. 7 8 9 10, relax. Can we do one more time? It's not that difficult. Let's do one more time. Okay, yes Pooja, we are doing it one more time. Let's start. Inhale, lift. अगर शोल्डर पे प्रेशर है बहुत ज्यादा, तभी भी रिलैक्स करना. जस्ट 5 काउंट होल्ड करो. 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स. कम टू वज्रासन. अभी बैकवर्ड बेंड किया तो उसको बैलेंस करने फॉरवर्ड बेंड करना पड़ेगा, काउंटर स्ट्रेच. तो हम लोग करेंगे मंडूकासन. How to do it? Just watch. You'll have to sit in Vajrasan. अगर वज्रासन नहीं हो रहा तो cross leg. If you're not able to sit for a long time, then cross leg. How to do Mandukasan? First we inhale, then exhale. Exhale किया, उसके बाद breathe in नहीं करेंगे फिर से. Exhale करने के बाद stomach को अंदर pull करेंगे. Okay? Form a fist, बन मुट्ठी, उसको नेवल के बाजू में रखेंगे, and then bend forward. Don't touch the head down. जितनी देर कंफर्टेबल हो उतनी देर होल्ड करेंगे. When you feel like breathing, first come up, release the stomach, then breathe in. Okay? So inhale किया, exhale किया, stomach को अंदर पुल किया, नेवल के बाजू में फिस्ट रखा, आगे बेंड हुए, ब्रीथ इन नहीं करेंगे, यहाँ पे ब्रेथ को होल्ड किया बाहर. When you feel like breathing in, come up, release the stomach, then breathe in. Let's do together. It's very good for any stomach related issues. सारे internal organs पे pressure गिरेगा. Okay? Inhale, exhale, pull the stomach in. Form a fist, put it beside the navel, go down. Stay there for as long as you are comfortable. Suffocating feel हुआ तो पहले ऊपर आ जाना है, उसके पहले थोड़े ऊपर आ जाएगी. एक बार हो जाएगा तो दूसरी बार खुद से करना है. One more time, do it by yourself. पैंक्रियास, लिवर, किडनी, सब ये रीजन में है जिन पर हम प्रेशर डाल रहे हैं. इट्स गुड फॉर डायबिटीज पेशेंट्स ऑल्सो. 2 times done, then come up, we'll do a variation in it. Okay, everyone is up. So अभी सिर्फ फिस्ट की जगह पहले लेफ्ट पाम जाएगा, फिर राइट पाम नेवल पे,
और फिर बेंड फॉरवर्ड करेंगे. लेट्स डू टुगेदर. इनहेल, exhale, pull the stomach in, left palm, right palm, bend forward. Relax. Okay. Once done, come up. तो आज शवासन नहीं कर रहे, हम सिर्फ 20 सेकेंड या 30 सेकेंड एक पोस्चर करेंगे. इट्स कॉल्ड मत्स्य क्रीडासन. हाउ टू डू इट? वॉच. इट्स माय फेवरेट पोस्चर. Okay, so you lie in what we do in Makrasan, but elbow को थोड़ा अंदर लेना है. Right leg up, right elbow bend है, right leg up, left leg straight है, down, and you relax the cheek on the palm. Okay, just sleep like a baby. 30 seconds or 1 minute, we will just stay here. And I hope I could have shown it from top how it looks. I'll have to order a drone. Stay there. It will help you to relax the back as well. राइट नी ऊपर लो जितना कंफर्टेबल हो. करेक्ट. वेरी वेल डन. एवरीवन इज गेटिंग इट. यूवी, हाथ स्ट्रेट नहीं है, राइट एल्बो थोड़ा डाउन है. यस. स्टे देयर 10 काउंट्स. दिस इज योर शवासन फॉर टुडे. नो वन विल नेगोशिएट फॉर शवासन. अब ये ले लो. आई एम लाइक दैट वेजिटेबल वेंडर. A smile on her face, gentle smile, just relax. And sorry, you'll have to come up. You can do it your merry time. जब भी time मिले. Okay, now that I've shown, we all do this pose someday. जब नींद नहीं आ रहा रहता है तो we try different posture and this is one of the postures. Right? Now we will do a pranayama warm up. फिर उसके बाद 2-3 प्राणायाम करेंगे. The session is going to extend for 10 minutes. Okay? So first we will do abdominal breathing. Okay? So right हाथ नेवल पे रहेगा. What we have to do, जब inhale करेंगे तो stomach फूलेगा. Stomach will come out. Like a balloon, it is supposed to be filling up. 4 count inhale किया, 4 count hold करेंगे. And 4 count exhale through nose. Nose ही exhale करना. ठीक है? Inhale 4, hold 4, exhale 4. Exhale and hold आज नहीं कर रहे. ठीक है? We will do 6 to 7 rounds of it. Right हाथ navel पे, लंबा गहरा सांस भरना है. Inhale, stomach will rise up. 2, 3, 4. Hold. 1, 2, 3, 4. Exhale. 1, 2, 3, 4. Inhale. 1, 2, 3, 4. Hold. 1, 2,
3 4 एक्सेल स्टमक अंदर जाएगा 1 2 3 4 इनहेल 1 2 3 4 होल्ड 1 2 3 4 exhale stomach goes in 1 2 3 4 let's do 3 more rounds inhale 1 2 3 4 hold 1 2 3 4 exhale 1 2 3 4 inhale 1 2 3 4 hold 1 2 3 4 exhale 1 2 3 4 inhale 1 2 3 4 hold 1 2 3 4 exhale 1 2 3 4 inhale and relax for some time you can slowly open your eyes next we do kapalbhati right I'll share you one funny incident morning mein when we are doing this exercise so one person asked me if पेट already आगे है तो क्या करना है okay while inhaling lot of people have this bulge already so अगर है भी तो और inhale करना ठीक है next we do kapalbhati okay यहाँ पे सिर्फ रैपिड एक्सलेशन करना है ओके फोकस ओनली ऑन एक्सलेशन तो इनहेल किया एक्सहेल करते रह के जब एक्सहेल कर रहे हो तो उसी समय स्टमक विल गो इन टोटल 100 करेंगे 100 स्टमक इन एंड डाउन 100 स्ट्रोक्स ओके अगर बीच में टायर्ड फील हुआ तो 2-3 नॉर्मल ब्रेथ्स लेने हैं बट एवरीवन डज 100 जिनको हाई बीपी है वो बहुत स्लो करेंगे हाई बीपी का प्रॉब्लम है तो ओके दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर राइट इनहेल exhale फेस रिलैक्स रहेगा शोल्डर्स रिलैक्स डू इट इमेजिनिंग दैट जो भी टेंशन स्ट्रेस जो भी प्रॉब्लम्स है लाइफ में उसे एक्सहेल करके बाहर थ्रो आउट कर रहे हो बॉडी से उस एटीट्यूड के साथ करना है जस्ट कीप रिलैक्सिंग with rapid exhalation eyes will remain closed do not count I'll be counting 100 किसी ने कुछ हैवी खाया है ईना तो you can skip and do Brahmari instead. फिफ्टी मोर अगर स्टमक पेन हो रहा है तो इट इज ग्रेट अगर बैक पेन हो रहा है तो धीरे से करना
25 more. Inhale, take a deep breath in. Hold the breath, lock the chin against the chest. अगर लॉक नहीं हो रहा तो नॉर्मल होल्ड करना. Whenever you feel like exhaling, exhale करना होगा तो पहले chin lift करना फिर exhale करना. We are just doing the जाल अंदर बंद. उद्यान और मूल बंद नहीं कर रहे, just throat lock. Once you are exhaled, we will do one more round of 50. Okay, ideally it is done 5 to 10 minutes, but we will just do 150 strokes, which will be like 2 or 3 minutes. Inhale, exhale, start 50 times again. Continue. Why it is called Kapalbhati? Kapal means forehead. Bhati is shining. When you do Kapalbhati regularly or for a long period of time, your forehead shines. There is a glow on your face if done regularly. For best benefit, do it early morning on an empty stomach. Last 15. Inhale, hold the breath. Lock the chin against the chest. Hold it as long as comfortable. जब भी exhale करने का मन हुआ, पहले chin up, then exhale. All right, we will do now 9 rounds or 10 rounds of Nadi Shodhan. उसके बाद silence में जाएंगे. All right, then we will end it with Om chanting for 3 times. Left hand in Chin Mudra. By now everyone knows how to do Nadi Shodhan. Take the right hand up. With the right thumb, close the right nostril. Exhale through left first. Inhale left. Exhale right. Inhale right. Exhale left. 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 Inhale left. Exhale right.
Inhale right. Exhale left. 3 more rounds. Inhale left. Exhale right. Inhale right. Exhale left. Inhale left. Exhale right. Inhale right. Exhale left. Last round. Inhale left. Exhale right. Inhale right. Exhale left. Eyes remain closed. Right hand down. Both hands in Chin Mudra. Just remain silent for some time. Back will be straight. Shoulders will be relaxed. A gentle smile on the face. Just stay still. Observe the things happening around. For 1 minute, just stay still. Let's take a few deep breaths. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in and slowly breathe out. Slowly join your hands in prayer position. We will chant Om 3 times. Take a deep breath in. Shanti, Shanti, Shanti.
Loka samasta sukhino bhavantu. Rub your palms. Place it on ice. Feel the warmth on the ice. Make a cup of your palm. Blink your eyes in it and slowly bring the palms down. Butterfly. Whenever you say Om Shanti Shanti, say it with all your heart. Okay? All your prayers, जो भी अच्छी चीजें atmosphere में जाती है, it affects everyone. Okay? So when you ask for peace, everyone will get peace. Okay? So prayers में power होना चाहिए. Do with that emotion. Inhale, exhale, bend forward, just release, relax. Inhale slowly up. Thank you. Namaste. There is one more thing. Next week, I'll be going to my native place. So there will be recorded session and evening session 7 to 8 will be taken by Karuna. So you can attend 7 to 8, okay, or else the recorded session. I'll try to come live as many days as possible, but thoda network issue hoga, so I wouldn't be able to. All right. Take care. Bye.